Majestic mountains, the grandeur of the Himalayan peaks, and the picturesque beauty of its valleys. The Indian Himalayan region is spread across 13 states of India from the north all the way to the northeast. Of all these states, it is Uttarakhand that leads the way with abundant space and advantageous policies for the establishment of enterprise and industry in the state. And that was the thrust of the Uttarakhand Global Investors Summit, where Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah, and Chief Minister Pushkar Singh Dhami all encouraged investors to come to the state. The state government has also made several changes to its industrial policy, such that potential investors establish their businesses not only in the plains of Uttarakhand but also in its mountains. हम प्रदेश में स्थित हमारे जो एक से एक आज विश्व स्तरीय संस्थान हैं, जैसे विश्व स्तरीय संस्थाओं से निकलने वाली हमारी युवा पीढ़ी को राज्य के अंदर ही रोजगार भी देने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं. A state defined by peace and a crime-free healthy atmosphere, Uttarakhand is a go-to destination for investment. Every kind of state policy that can push industrial growth has been worked on with precisely that end in mind, creating bright prospects for all manner of infrastructural amenities in Uttarakhand. The Char Dham Yatra project and the Delhi-Dehradun Economic Corridor are testament to that. Various policies have been put in place by the state government to create a beneficial environment for budding enterprises. Different kinds of policies, along with a single window system, have been introduced to attract investors to Uttarakhand. To speed up the process of industrial growth in the state, Rudrapur, Haridwar, and Dehradun have been earmarked along with several mountainous regions. There are 330 large and 65,000 micro, small, and medium enterprises in the state that are providing employment to lakhs of people. Ultimately, the goal of the Global Investors Summit is not only bring industry and business to the state, but also to open the doors of employment for the youth of Uttarakhand. In order to promote industrial growth in the remote mountainous regions of Uttarakhand, employment opportunities have been created. Notable changes have been brought about in the state's industrial policy for the collective, inclusive development of Uttarakhand, while also ensuring that investors do not face any difficulties in launching their enterprises. The government's policy changes cover a wide range of facilities, from issues related to land, electricity, water and roads, to a speedier process of getting NOCs to set up the industries. Several industrial corridors have been developed in the state to facilitate the setting up of businesses and industry. The Pushkar Singh Dhami-led government in Uttarakhand has called upon the youth to lead the startup revolution in the state. The Uttarakhand Startup Policy 2023 is a signal in every district of Uttarakhand, which will provide a new startup networking and other basic government assistance right there in the district. And today, Uttarakhand has close to 950 startups working over here. Since the last year, we've been glad to say that the startup ranking framework of DPIIT, every year we move significantly forward, and now today Uttarakhand is one of the top 5 leading states in India in terms of startups. An ideal environment has been created for investment in the state, which sees the government lay out the red carpet for small enterprises, large industries, and startups alike. Uttarakhand is rapidly becoming the new destination for business investments. There is an increasing enthusiasm among young startup founders and great satisfaction with the policies of the Pushkar Singh Dhami government in Uttarakhand. They have great hope in the belief that a young leader like the Chief Minister will take the youth of the state forward. The state government has created a venture fund of Rs 200 crore for new startups. It is because of the policies of the Dhami government in Uttarakhand that today 950 startups in the state are recognized by the central government, while 152 startups are recognized by the state government. It is these policies of the Dhami government, thanks to which Uttarakhand finds its place among the top 5 states of the country.
हमारी बेकरी में खासियत ये है कि हमने ये जो प्रोडक्ट डेवलप किए हैं ये खास सेगमेंट के लिए बनाए हैं जो कि सीलिएक डिजीज़ से पीड़ित है। बेसिकली वो लोग जिनको गेहूँ से प्रॉब्लम है या ग्लूटेन इंटॉलरेंट है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो प्रोडक्ट्स हैं हमने मिलेट बेकरी से बनाए हैं, तो मिलेट से रिलेटेड बहुत अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो आम आदमी भी, जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, वो भी इनको यूज़ कर सकते हैं। CO2 itself is a health hazard gas. Its concentration you see in the daily what is happening. People are in threat because life is in threat actually. So CO2 is coming from the industry and also from the automobiles and other, but major contributor to the industry. जो अभी करंट सोल्यूशन है मार्केट में डीकार्बनाइजेशन के लिए या नेट ज़ीरो पहुंचने के लिए, वो तुरंत अप्लाई नहीं किए जा सकते, क्योंकि हाइड्रोजन को भी हम एक सर्टेन अमाउंट तक ही ब्लेंड कर सकते हैं, उसको भी हम उतने ही अमाउंट तक यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है कि हमें मशीनरी चेंज करनी पड़े, वो अभी फीजिबल नहीं है। तो हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करी है जो किसी भी इंडस्ट्री के जहाँ से धुआं निकल रहा हो, चिमनी से आपने धुआं निकलते हुए देखा होगा, चिमनीज़ में अपनी हमारा डिवाइस इंस्टॉल करें, वहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करेगा एंड उसको कैप्चर करने के बाद वो उससे इंडस्ट्रियल या यूज़फुल प्रोडक्ट बनाएगा जो हम आगे यूज़ कर सकें। तो हम बोल सकते हैं कि एक वेस्ट से हमने वेल्थ मॉडल क्रिएट किया है। There has also been huge investment in the field of Ayush and wellness in the state, whether it is education in Ayush or investment in its expansion. For the purpose, MOUs worth about rupees 17,000 crores have been signed, in which the grounding of rupees 400 crore has already been done, which is a milestone in the Ayush and wellness sector for the state. आयुष में पहाड़ और प्लेन में ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि आयुष में जो मेन काम है वो नेचर के अंदर जाके करने का होता है। वेलनेस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी पहाड़ों में ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो उसमें हमारे पास पूरे प्रदेश में काम चल रहा है। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, उसमें जो मेजॉरिटी है वो प्लेन के ज़िलों में रहने वाली है, बाकी तो सारी चीज़ें हमारी पहाड़ की तरफ ही जाएंगी। और उसमें वेलनेस में काफ़ी लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, कई सारे बड़े प्लेयर्स भी आए हैं। हम लोग जो लक्ष्य था हम लोग का MOU का, उससे 3 गुना हम लोग ने किया है। तकरीबन 17,000 करोड़ का MOU साइन किया है और 400 करोड़ करीब हम लोग अभी तक ग्राउंड कर चुके हैं। प्रयास ये कर रहे हैं कि मार्च 2024 तक 1,000 करोड़ करीब हम लोग ग्राउंडिंग कर दें। माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश हैं कि जो MOU हुए हैं उनके ग्राउंडिंग पर ध्यान दिया जाए, उस पर फोकस किया जाए। तो हम लोग वीकली रिव्यू कर रहे हैं। हर एक जो बड़े हमारे जिन्होंने हमारे साथ इन्वेस्टर जिन्होंने साइन किया है हमारे साथ MOU, उनसे भी हम लोग टच में हैं। मैंने नोडल अधिकारी बना रखे हैं हर एक से बात करने के लिए कि कौन किससे बात करेगा। मैं स्वयं इसकी समीक्षा करता हूँ हर सप्ताह। तो प्रयास यही रहेगा हम लोग का कि अगर कोई भी दिक्कत आ रही है इन्वेस्टर को, तो उसको हम लोग रिजॉल्व करें और प्रयास ये करें कि जो भी इंटरेस्टेड है हमारे स्टेट में आने में, यहाँ काम करने में, उसको पूरा सहयोग दिया जाए सरकार की तरफ से। और जल्दी से जल्दी जो इन्वेस्टर समिट का जो एक इनिशियल MOU या इनिशियल जो डिस्कशन है उसको ग्राउंड पे उतारा जाए। There is immense potential in the field of Ayush and wellness in the state in not only being a substantial source of employment, but in also strengthening the economy of the state. The policies of the government have been made extremely attractive for potential investors. Not only that, there is every facility in Uttarakhand, from road connectivity and communication services to air connectivity and drinking water. The government has also made available a vast network of electricity for every sector in the state. और लगता है कि वाकई आगे चल के एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक सबको मिल के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि फाइनली हम सबको लोगों को स्वस्थ करना है, लोगों को फिट करना है। लोगों को, चाहे वो उत्तराखंड फिट हो, चाहे हमारा देश फिट हो, इंडिया फिट हो, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें इन तीनों के मिश्रण के साथ आगे बढ़ना होगा। Uttarakhand's climate, natural beauty, and natural resources make it the perfect spot for the Ayush and wellness sector. Investors from across the country and the world are coming to Uttarakhand to invest in this sector. Ayush and wellness are proving to be a firm base for the economic strengthening of the people in the mountainous regions. Yoga, wellness, and Panchakarma centers in the state are proving to be huge platforms when it comes to giving Uttarakhand an identity in the field of wellness tourism. On the other hand, Uttarakhand has also become a hub for Ayurvedic medicines and products. This is
Government is not just to grow the economy, but also provide employment to the state's people. For this, the government has created policies for many sectors, including the key industry of food processing. During the Uttarakhand Global Investors Summit, not only was an appeal made to investors to invest in this sector, but a plan was laid out for how their investment would prove beneficial for them and the state. उत्तराखंड ने एक नई राह पकड़ी है। वहाँ जहाँ जनता का विश्वास हमने जीता है, आज उद्योगपतियों का विश्वास भी हमने जीता है। अभी तक कल तक 3,44,000 करोड़ तक के MOU साइन हो चुके हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि आज हर एक उद्योगपति उत्तराखंड में आना चाहता है, अपने उद्योग लगाना चाहता है। Uttarakhand is the third largest apple producing state in the country. The state is also known for its large scale production of vegetables, fruits and flowers. This is the reason why investing in food processing and related industries brings with it immense possibilities. This is the reason why the state government has invited entrepreneurs to invest in the food processing sector. Most of Uttarakhand is covered in hills and mountains. The food processing sector is the most viable option to bring development to the people who dwell on these hills and mountains. There is immense potential for food processing units and wineries based on organic farming, agriculture, and horticulture in the state. Products from Uttarakhand were earlier marketed and sold under many different brand names. But the Pushkar Singh Dhami government has taken a big decision in this regard. With an emphasis on the high-quality marketing and branding, all products from the state will be available under one name that will give Uttarakhand a new identity. A name that will take Uttarakhand to the world and establish the state firmly on the global map. It was this thought that gave birth to the brand name House of Himalayas. Most importantly, the name has also been registered. House of Himalayas is a brand that represents Uttarakhand. Himadri products, those made by the various councils and committees of the state, products made by self-help groups will now all be marketed under this one name. उत्तराखंड के हमारे जितने लोकल उत्पाद हैं, फार्म के जो उत्पाद हैं, नॉन फार्म के हैं, आर्ट के उत्पाद हैं, उन सबको अब एक ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज़ के नाम से हम लोगों ने ट्रेडमार्क रजिस्टर करा लिया है। और अब ये हम लोगों का पूरा प्लान ऐसा बनेगा कि इनकी स्टैंडर्डाइजेशन, क्वालिटी, मार्केटिंग इतनी अच्छी करी जाए, पैकेजिंग इतनी अच्छी करी जाए और इन सारे प्रोडक्ट्स को हम इंटरनेशनल लेवल पे यानी ग्लोबल मार्केट पे ले जाएं। तो इसकी हम लोगों ने काफ़ी इसमें होमवर्क ऑलरेडी कर लिया है। 175 MOUs worth Rs 19,260 crore have been signed in the horticulture and food processing sectors in Uttarakhand. The sectors provide ample potential for capital investment along with employment generation and an increase in livelihood for the rural population of the state. The best quality millets are produced here in Uttarakhand. This is why the state government has made a new, effective and strong policy to encourage the production of millets and other organic products along with the development of horticulture. "50,000 poly houses will also be established in the state for the production of seasonal vegetables, fruits and flowers. Many investors are coming forward to invest in this sector as the Dhami government is focused on strengthening the economy by encouraging the people to enter the sectors of food processing, agriculture and horticulture in the state." हमने एक यूनिक कॉन्सेप्ट डिज़ाइन किया है जिसके अंदर हमने ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट के इनिशिएटिव को हम लेके आए हैं और उत्तराखंड में इसका हम प्लांटेशन प्लान किए हैं और हमने MOU साइन किया है जिसमें 4,000 हेक्टेयर प्लांटेशन हम करने वाले हैं। जितनी भी हमारी प्लांटेशंस होंगी, हर प्लांटेशन में जितने ग्रामीण क्षेत्र से जो यहाँ से हमारा प्लान हो रहा है, सो उनको सिस्टमेटिकली पहले उनका स्किल ट्रेनिंग कराया जाएगा कि फार्म मैनेजमेंट कैसे होता है, जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी, नेचुरल फार्मिंग होगी, डेयरी फार्मिंग होगी, वो उस तरीके की इससे अलाइड सर्विसेज भी इसमें हम इन्वॉल्व करेंगे। और इसका पर्पज़ होगा कि वी आर गोइंग टू ग्रो अ पेटेंटेड ट्री फ्रॉम जर्मनी इन इंडिया to supply sustainable wood.
At the Uttarakhand Global Investors Summit, Union Home Minister Amit Shah talked about bringing development and economic growth to Uttarakhand in an eco-friendly manner without spoiling the pristine beauty of the state. He expressed confidence that in this regard, Uttarakhand will emerge as a strong example for the entire world. It is because of the state's abundant natural beauty that so many industries and businesses want to start operations in Uttarakhand. मित्रों, आज का ये समारोह 3.5 लाख करोड़ के एमओयू के साथ नए उत्तराखंड की अनंत संभावनाओं को तराशने की शुरुआत। अब उत्तराखंड अपने राज्य की प्राकृतिक सौंदर्य को बिगाड़े बगैर इको फ्रेंडली तरीके से किस प्रकार से इस छोटे से राज्य को उद्योग जगत के साथ भी जोड़ा जा सकता है, इसका एक मजबूत उदाहरण समग्र विश्व के सामने बनेगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। The Dhami government's focus is especially on the hilly districts of the state. The livelihood of a large population of the state is linked to animal husbandry, dairy, and fisheries. The life of people in the mountainous regions is especially dependent on these sectors. This is also why the government is paying special attention to the sector which plays an important role in the development of the state. हमारे 3 जिले ऐसे हैं जो तराई के जिले हैं और 10 जिले पर्वतीय जिले हैं. The allied sector, which is fisheries, animal husbandry and milk federation, they contribute around about 3% of Uttarakhand's GSDP. तो हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो हमारे हिली डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पर आज भी 80% of the people are connected with these 3 ministries. This is their livelihood. 60,000 families are connected with only milk federation in Uttarakhand. Close to 20,000 families are connected to animal husbandry, and 7,000 families are connected with fisheries department. Uttarakhand has more than 70% forest area. This is the reason why the state government wants to use this forest area for the development of the state. There is immense potential for investment in the ecotourism sector, which can ensure that the forests are not damaged while the economic condition of the people and the economy of the state are strengthened. 25 lakh people are associated with 11,230 forest panchayats in the state. They can be strengthened by employing them in the field of cultivation of intensive and medicinal products. Carbon credit can be extended through the classification of forest and panchayat lands in the state. An agreement has been signed to invest lakhs of crores in this sector in the state. आज जिससे पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज और आपका ये जो पॉल्यूशन की जो एक बीमारी पूरी दुनिया को परेशान किए हुए आने वाली जनरेशन को खतरा है, तो आजकल जो कार्बन एमिशन जिस तरह से बढ़ रहा है, इसको रोकने के लिए मैक्सिमम लोग कार्बन ट्रेडिंग के माध्यम से आना चाहते हैं. तो हमारे यहाँ बहुत बड़ा फील्ड है, क्योंकि हमारे राज्य का 70% हिस्सा तो आच्छादित है. तो हमने उसके लिए उनको ऑफर किया है कि आप कार्बन ट्रेडिंग के लिए हमारे राज्य को चुने. तो ये तमाम संभावनाओं को जिस तरह लगता है मुझे, जिस तरह से लोगों में इसको लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साह था, और जिस तरह उस सेशन में 70 से ज़्यादा उद्योगपतियों ने मुझे अपने विजिटिंग कार्ड शेयर किए, तो इस बात का स्पष्ट ये संदेश है कि वो सरकार के साथ डायलॉग करके इन क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहते हैं. At the Uttarakhand Global Investors Summit, Prime Minister Narendra Modi has described the state as the best wedding destination in the world. Therefore, to improve the economic condition of the state and increase employment opportunities, the Pushkar Singh Dhami government has selected many wedding locations in Uttarakhand. डेस्टिनेशन उत्तराखंड का मुख्य उद्देश्य ग्रीन इकोनॉमी, रोजगार को लेकर इकोलॉजी और इकोनॉमी के द्वारा राज्य का समुचित विकास करना है. किसी ने ठीक कहा है कि बुलंदियों पर पहुंचने से पहले बुलंदियों पर पहुंचने से मुश्किल है बुलंदियों पर बने रहना. बुलंदियों की छूने की कोशिश का हौसला हमने आपसे पाया है. The government's policies in this sector are such that in time the state will become the biggest wedding destination hub of the country. The government is confident that in the coming times the sector will play a huge role in the country's economy and help Uttarakhand carve its own identity.